In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, may mercy, peace, and blessings of Almighty Allah be upon all of you. Welcome you all, students, today in this our lecture series program. This is lecture 4, and our today's topic is what is language. Today, what we are going to study in our lecture, there are key points in the following lecture, and those key points are: number 1, what is language? Definitions by the renowned linguists. Number 3, what are design features of language? And number 4, characteristics of language. So these are some of the topics or areas we are going to discuss in our today's lecture. So let's learn about these all things today. Number 1, what is language? Before going to make you understand with some of the definitions, I would like to tell you this is an equivalent question to what is life. This has an importance. There are a number of linguists who have rendered definitions and explanations of linguistics. I will discuss some of them here today. So when we study human language, we are approaching what some might call the human essence, the distinctive qualities of mind that are, so far as we know, unique to man. And this definition has been given by Noam Chomsky in his book Language and Mind. Let's just make you understand here what is the understanding of this definition. स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इस डेफिनेशन के मुताबिक ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो हम कह सकते हैं कि एक ह्यूमन इसेंस की, जब हम ह्यूमन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो एक ह्यूमन इसेंस की बात कर रहे हैं. ह्यूमन इसेंस क्या है? यानी ह्यूमन कोर नेचर, कि इंसान की कोर नेचर क्या है, कुदरती जो है वो उसकी सलाहियतें क्या हैं इंसान की. और हम जब बात कर रहे होते हैं लैंग्वेज की, हम बात कर रहे होते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इन ह्यूमन being, our distinctive quality, as it is written here, the distinctive qualities of mind. इंसान की डिस्टिंक्टिव क्वालिटी है लैंग्वेज इंसान के माइंड की, और ये जो है बिल्कुल ही यूनिक है. दिस इज़ टोल्ड बाय नॉम चॉम्स्की. Here is another definition which is also told by Noam Chomsky: language and responsibility. लैंग्वेज सर्व्स एसेंशियली फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थाट. दिस इज़ कि लैंग्वेज जो है वो सोच के एक्सप्रेशंस को कहा जाता है, कि हम सोच को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं लैंग्वेज के थ्रू, और लैंग्वेज जो है वो एक टूल है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हियर नॉम चॉम्स्की हैज़ टॉक्ड अबाउट. हियर इज़ अनदर डेफिनेशन बाय सफायर. And this is one of very important and a very renowned definition used by the linguist. According to Sapphire in 1921, language is purely human and non-instinctive method of communicating idea, emotions and desires by means of voluntarily produced symbols. So this is very essential here to make you understand कि अकॉर्डिंग टू सफ़ायर लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन है, प्योरली ह्यूमन, यानी सिर्फ इंसान ही ऐसा है एक जानवर के जो है वो लैंग्वेज जानता है और समझता है. और ये नॉन इंस्टिंक्टिव का मतलब ये कि गैर फितरी है. दिस इज़ नॉट समथिंग नेचुरल इन ह्यूमन. Humans always learn language. This is not natural at all. Non-instinctive कहते हैं, गैर फितरी जो है वो. Language does not pass from parents to a child. A child has to learn a language, and he or she learns the language of a society in which he or she is placed. It means wherever the child is, he learns the language of his society.
जहाँ पे वो है। यानी देखें, अगर जो है वो किसी बच्चे को किसी भी मुआशरे में पेरेंट्स ना हो, किसी मुआशरे एक मुख्तलिफ मुआशरे में छोड़ा जाए, तो वो उस मुआशरे की लैंग्वेज सीखेगा, ना कि अगर उसके पेरेंट्स जो है वो किसी ख़ास ज़बान से ताल्लुक़ रखते थे तो वो भी वही ज़बान बोलेगा। नहीं, वो उस मुआशरे की ज़बान बोलेगा जहाँ पे वो गया हुआ है। सो इट मीन्स दैट लैंग्वेज इज़ नॉन इंस्टिंक्टिव, राइट। और ये नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड है, एंड ये जो है वो सिंबल्स वगैरह यूज़ करके और अपने इमोशंस और ख्वाहिशात का इजहार करता है लैंग्वेज के थ्रू। दिस इज़ ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सफ़ायर। Here we are going to learn another definition of linguistics. This is told by Hall in his essay on language in 1968. Tells us that language is the institution whereby humans communicate and interact with each other by means of habitually used oral and auditory and arbitrary symbols. And here is another definition which is my favorite one, that is language is system of symbol for encoding and decoding information. This picture suits for this definition, and this is the picture which explains all about the way और अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डेफिनेशन। आप देखें सेंडर जो है वो ये जो स्पीकर है, जो सोर्स है, ये इन कोडिंग का मतलब ये है कि ये जब बोल रहा होता है तो ये जो बोल रहा होता है यहाँ इसका जो मैसेज है वर्ड्स के थ्रू इनकोड होता है मैसेज, और फिर डीकोड यहाँ पे जो समझने वाला है इसको डीकोड करता है यानी समझता है, ये रिसीवर है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इनकोडिंग एंड डीकोडिंग इंफॉर्मेशन। Now students, here is another area of language when we are talking about, and that is design features of language. The American linguist Charles Hackett pioneered the useful approach and made a list of design features and considered whether these are shared by other animals. और अकॉर्डिंग टू हिम कि ये डिज़ाइन फ़ीचर्स इंसान में क्या पाए जाते हैं, और उन्होंने कंपेयर किया है कि इंसानों में क्या पाए जाते हैं और जानवरों में क्या पाए जाते हैं। सो लेट्स स्टडी वन बाय वन व्हाट आर द डिफरेंसेस ऑफ दीज डिज़ाइन फीचर्स इन ह्यूमन and other animals. Number one, when we are talking about use of sound signals. The use of sound are sounds employed by human, birds, dolphins, cows, monkey and other species. Thus, in the case of sound signaling, is no way unique. When we are talking about sound signals, human and animals are having sound signals equally. इंसानों में भी साउंड सिग्नल्स हैं और जानवरों में भी साउंड सिग्नल्स पाए जाते हैं इक्वली. इट मीन्स कि बोथ दी species, human and other animals, are having sound signals. When we are talking about the need for learning, in need for learning, animals automatically know how to communicate without learning. Their systems of communication are generally inbuilt, right? But in human acquire language which culturally transmitted. Now this is very essential point कि the need for learning ये कि human जो है वो हमेशा सीख रहा होता है language, but एनिमल्स में ऑटोमेटिकली लैंग्वेज और कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक होती है, उनको ज़्यादा सीखनी नहीं पड़ती. सो उनके अंदर कह सकते हैं कि इन बिल्ट एक सिस्टम होता है जो कि जेनेटिकली उनके अंदर आता है. नंबर सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज़ ड्यूअलिटी और डबल आर्टिकुलेशन. ड्यूअलिटी इन human language has a stock of sound units or phonemes which are similar in number to basic sounds possessed by animals. Those sounds are about 30 to 40. अब देखें कि ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर जो है वो बहुत सारे साउंड यूनिट्स हैं या फनीम्स जिसको कहें फनीम्स हैं,
ये जो है वो साउंड यूनिट जो है ऑलमोस्ट 30 to 40 पाए जाते हैं. But when we are talking about animals, animals use vocal signals or the stock of basic sounds and vary in species. A cow has 10, chicken 20 etc. यानी एनिमल्स के अंदर जो बेसिक साउंड्स हैं वो वैरी करते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, और वो जो है वो काउस के अंदर 10 हैं और चिकन्स के अंदर 20 हैं. यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है ड्यूअलिटी एंड डबल आर्टिकुलेशन के, कि ह्यूमन के अंदर जो है वो डबल आर्टिकुलेशन पाई जाती है, ड्यूअलिटी पाई जाती है साउंड्स, यानी जो फनीम्स होते हैं, जो बुनियादी साउंड्स होते हैं, उनकी मुख्तलिफ वैरायटी होती है. हालांकि जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स दे हैव वोकल सिग्नल्स उनके अंदर हैं और वो लिमिटेड है, मुख्तलिफ स्पीशीज़ में मुख्तलिफ पाए जाते हैं. Again, when we are talking about displacement, human can discuss objects and events that are removed in time and place. Displacement, which is used in physics, और इसका इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इंसान जो है वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बातें कर सकता है. However, in animals mostly communication is about things in the immediate environment only. इन जानवर जो है वो सिर्फ प्रेजेंट जो है इमीडिएट इवेंट में प्रेजेंट टाइम पे बात कर सकता है, यानी अपनी कम्युनिकेशन कर सकता है, किसी और वक्त की कम्युनिकेशन नहीं कर सकता. जबकि ह्यूमन में ये क्वालिटी मौजूद है कि वो पुराने वक्त की जो है कम्युनिकेशन कर सकता है अपने लैंग्वेज के थ्रू, क्योंकि इसके अंदर लैंग्वेज बहुत ही डेवलप्ड होती है. Again, when we are talking about creativity or productiveness, so creativity, humans use language to make his language more effective, like figurative language. But you see, there is no creativity or productivity in animals. When we are talking about patterning, human language has a certain patterns. However, एनिमल्स लेक दैट सिस्टम. सो यू सी, पैटर्निंग भी जो है वो सिर्फ इंसानों में पाई जाती है और वो सर्टन पैटर्न्स होते हैं, मगर जो है वो एनिमल्स में दीज आर एब्सेंट. अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट arbitrariness, and this is one of very essential points, arbitrariness in the sense because there is no inherent relation between the words of a language and their meanings. आर्बिट्ररीनेस जो है वो कहते हैं कि जिसमें जो है वो वर्ड्स और मीनिंग्स में जो है वो फ़र्क हो. आर्बिट्ररीनेस कहते हैं उर्दू में सवाबदीद को. सवाबदीदी जो है वो किसी चीज़ में हो, तो यानी इंसान में सवाबदीदी होती है, उसके वर्ड्स जो है वो कुछ और होते हैं, उसमें मायने जो है वो बिल्कुल उसके अपोजिट मुख्तलिफ होती है. ये ह्यूमन के अंदर पाया जाता है, मगर एनिमल्स के अंदर जो है वो जो वर्ड्स का पैटर्न है वो अकॉर्डिंग टू दैट मैसेज होता है. ठीक है. इन मोस्ट वर्ड्स नो लिंक एग्जिस्ट बिटवीन द साउंड्स यूज्ड एंड देयर मीनिंग्स. So this is in human beings, that there is no connection between words and their meanings. But in animals, there is a recognizable link between a message and signal, like warning signals from a dog by barking. कि एक डॉग जो है जब वो बार्किंग कर रहा होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो किसी को वार्न कर रहा है. उस साउंड के उन जो है वो बार्किंग में जो है उसके ख़ास सिग्नल्स होते हैं. But in human, the case is reverse. Sometimes humans don't show the connection, like the word elephant and the elephant it symbolizes. यानी elephant जो word है उसमें और जो है उसके symbols में कोई फ़र्क नहीं होता. In other words, we can say that there is no reason why we call woman in English, औरत in Urdu, Zan in Persian and famine in French.
It means there are different words in different languages, and this is all about the arbitrariness which is found only in human being, not in animals. We are coming towards characteristics of language, and here when we are talking about language is verbal, vocal, sound. कि लैंग्वेज के करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नंबर वन आता है लैंग्वेज इज़ वर्बल, वोकल साउंड, यानी लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है, और वोकल साउंड्स जो होते हैं हमारे, ये जो है वो लैंग्वेज के जो है वो एक पहचान है. लैंग्वेज इज़ मेड ऑफ वोकल साउंड्स. वोकल साउंड्स जो है यही लैंग्वेज को बनाते हैं. नंबर टू, लैंग्वेज इज़ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है. नंबर थ्री, लैंग्वेज इज़ सोशल फिनोमेना, कुदरती रुझान है. नंबर फोर, लैंग्वेज इज़ नॉन इंस्टिंक्टिव, गैर फितरी है, कन्वेंशनल, रवायती है, एंड आर्बिट्ररी, सवाबदीद है. लैंग्वेज इज़ नॉन इंस्टिंक्टिव यानी गैर फितरी. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट लैंग्वेज इज़ लर्नड इनटू society, that is not inborn at all, right? That is certainly there is इनबोर्न क्वालिटी इन ह्यूमन बीइंग, मगर जिस सोसाइटी में इंसान रहेगा उसी सोसाइटी की लैंग्वेज सीखेगा. यानी कि कोई एक लैंग्वेज जो है वो ले करके कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ. से दैट लैंग्वेज इज़ नॉन इंस्टिंक्टिव. नंबर टू, दैट इज़ कन्वेंशनल, यानी रवायती है. जैसे जो है वो रवायत होगी बोलने की, बच्चा भी वही लैंग्वेज सीखेगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज. एंड देन arbitrary, already we defined this word in design features. Once again we are going to make it clear what is arbitrary. Arbitrary in the sense because there is no inherent relation between the words of a language and their meanings. There is no reason why we call woman in English, aurat in Urdu, zan in Persian, and famine in French. The selection of words suggests that language is arbitrary. There is 5. Language is symbol, language is systematic, language is unique, creative, complex, modifiable. Language जो है वो बिल्कुल यूनिक है, उसमें क्रिएटिविटी भी है, कॉम्प्लेक्स इन थोड़ी मुश्किल भी है, मॉडिफाइबल चेंज भी हो सकती है, वो फिक्स्ड नहीं है, स्टैटिक नहीं है, मॉडिफाइबल है. थैंक यू वेरी मच.